Bombay is fast, very chaotic. Everybody's on a mission and there is no moment to pause. The taxis, essentially, I think they're quite like the heartline of travel in Mumbai. People from all caste, community takes the taxi. That's why I felt that it was truly like a mass communication medium. I'm Sanket Avlani. I'm a designer art director. I'm based in Mumbai. Design as an industry here is still very new, it's naive, and the value for it is very understated. I wanted to design a taxi, and that's where the project started. Putting art in the public space, like a taxi, can exist as a storytelling medium. I think a lot of these social issues that exist today in India and even in Mumbai continue to exist because of lack of communication. And at Taxi Fabric, we decided that we would work with designers who've sort of invested their time in coming up with design solutions for social good. We've done a taxi with road safety, learning the Indian Sign Language, being more inclusive towards students with special needs. Roshni Desai, we worked on this taxi that talks about women's rights. Today you talk to people, they're like, oh yeah, a woman has her place and a man has his role, and that's how it is and that's how it's going to be. But no one really asked why. The question here is, kya purusho par ye niyam lagu hai? Which means, do these rules apply on men as well? So I just want to just start that thought, even if it plants a seed, even if it sparks a discussion, that's fine. These conversations about social good, it can lead to a change of mindset. We've tried to communicate through design. We've tried to do it in a medium that is, you know, almost like an equalizer. आजकल लोग कोई टैक्सी में बैठता है तो ऐसे तो कोई किसी से बात करता नहीं है। टैक्सी में बैठा, पैसा दिया, निकल गए। ये टैक्सी फेवरेट प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो पैसेंजर बैठता है वो बात करते हैं हमसे, खुश होते हैं, अच्छा लगता है, दो चार बात करते हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। All of these conversation starters sort of amplifying through taxis will eventually at least ask the right questions. If this gets the right support, I feel that it could lead to social change, yeah. In this small town outside of Mumbai, there's a school. And in the school are adorable grannies. This is India's first school for grandmothers. Every day, elderly women come to a school called Ajaibai-Chi Shada for the education they missed out on earlier in life. माझे नाव सुनंदा दत्तात्रय केदार. माझे वय 65 आहे. 5वी पर्यंत शाळा झाली माझी. लहानपणापासून मला वेळ शाळेत जायला नव्हता. Because most girls weren't allowed to go to school, they could only dream of an education. तर 1 वर्ष झालं बांगर सरांनी अजिबाईची शाळा काढली. मला अभ्यास करायला खूप मजा वाटतं. शीतल प्रकाश मोरे माझी शिक्षिका माझ्यापासून लहान आहे. 35 वर्षाची आहे. माझ्यापासून लहान आहे. मी तिला खूप मान देते. ती तशी मूळ अक्षर देतात ना ती मॅडम. कोणाला सही काढायला सांगतात, कोणाला मूळ अक्षर काढायला सांगतात, तर वाचायला सांगतात. Unable to sign their names to important documents their whole lives, the women show off their signature with great pride today. And for most of them, getting to attend school is one of the best parts of their day. दुपारी जेवण बनवायचं, कपडे धुवायचे, भांडी घासायची, मग थोडा आराम करायचा. 2 वाजले का मग शाळेत जायचं. मग येतो घरी 4 वाजता. माझी नात मला अभ्यास करायला मदत करते. मला अभ्यास करावा 1 तास लागतो. Though the School for Grannies is only a 1-year program, many of the women have plans to continue their education. मी जोपर्यंत जिवंत आहे तिथपर्यंत शाळेत जाईल. मुलगी शिकली, प्रगती झाली.
सगळ्या आजीबाईंनी शाळेत जायला पाहिजे. अभ्यासाचा खूप महत्त्व आहे. In India, you have 700,000 villages, and each village has at least 2 or 3 bands. There is no marriage without a band. There is no death without a band. There is no birth without a band. And bands, they need instruments. Roughly 90% of India's brass band instruments come from this musical alley, Jalikoti Lane in the city of Meerut. Jalikoti Lane has about 100 manufacturers. But one of the most renowned is Nadir Ali Company. Mr. Nadir Ali, who was my uncle, started this company in 1885. He was the first man who started a band in India. He raised the first band in 1900 with 24 people. It was immensely liked by the Indian people. And his uncle wasn't the only one with a passion for the family business. My father's father, my father, myself, and now my children. So you can say the 4th generation is here. We make brass band musical instruments like trumpets, cornets, euphonium, tuba, and also percussion instruments like drums and things like that. You see, instrument making is an art. Our instruments are the best because we use a system of quality control. The most important thing in making an instrument is the composition of brass, the material quality. The instruments from here go to many countries, anywhere from Saudi Arabia to Germany to France. I have devoted my life in making instruments. Music is the elixir of life. When you play and you concentrate and you play a good tune or you hear a good tune, you think you are out of this world. Music is something, but you listen to it and you are lost and you are happy. ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਵਜਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ 85 ਕਿਲੋ ਦਾ ਦਮਾਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੇਰਾ ਦਮਾਲਾ 645 ਮੀਟਰ ਦਮਾਲਾ ਵਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਕਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਦਮਾਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਨ ਵਾ ਨਾ ਮੇਨ ਪੱਗ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਰੋਹ ਵਾ ਬਈ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਦਮਾਲਾ ਸੀ ਆਉਣ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਆਉਣ ਮੈਨੂੰ ਦਮਾਲਾ ਸੀ ਆਉਣ ਨੂੰ 6.5-7 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਆਓ ਪੱਗ ਦਾ ਰੋਹ ਵਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰਾ ਹੁਕਮ ਲੱਗਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਭਲਵਾਨੀ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਚਾਅ ਵਾ ਪੱਗ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਫੋਟੋ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਲਈ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਜਦੋਂ 15 ਖਿੱਚਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਕੀ ਨਿੰਦਿਆ ਮਤ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਐਡੀ ਪੱਗ ਕਿਉਂ ਬੰਨ੍ਹੀ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ அவங்க பறக்கிறதுல ஒரு ஆனந்தம் நம்ம என்னதான் வச்சு வளர்த்தாலே அதில் கிடைக்காது அவங்களுக்கு In Chennai, India, there's a tiny camera repair shop run by a man named Joseph Sekar. ஆனால் அந்த சேகர்ன்றது போயிடுச்சு
வேர்ல்டு வைஸ் வந்து பேர்ட்மேன்ன்ற ஒரு. Sekhar got his nickname because every day he feeds thousands of hungry parakeets on the roof of his home. இதுக்கு வந்து எந்த மோட்டிவேட்டிங் கிடையாது. அதாவது நம்மள மாதிரி அது ஒரு உயிர். நமக்கு எப்படி அப்பா அம்மா இருக்கிறாங்களா அவங்களுக்கெல்லாம் நாம தான் அப்பா அம்மா மாதிரி. அதனால் அதுங்களுக்கு ஒரு உயிர். The 2006 tsunami that hit Southeast Asia flooded parts of India and displaced thousands of birds. Sekhar noticed a pair of parakeets outside of his home and set some rice out for them. Then more started to show up. And well, இப்போ இந்த ஃப்ளட்டு வந்தப்போ சென்னையில் வந்து ஃப்ளட் அப்போ வந்து ஏறக்குறைய வந்து ஒரு 8,000 parakeets வந்திருக்கு. Feeding 8,000 parakeets twice a day is a great expense. Sekhar spends about 40% of the money he makes from repairing cameras, buying food for the birds. என்னுடைய வளர்ச்சியை பொறுத்து தான் அவங்களுடைய சாப்பாடு. But for the birdman of Chennai, there's more to life than money. பணம் தான் வாழ்க்கை இல்லைம்மா. பணம் வந்து தேவை தான். பணமே வாழ்க்கை இல்லைல்ல. பணம் வந்து ஒவ்வொரு மனிதனுக்கு தேவை. ஆனால் தேவைக்கு மீறிய சில பேர் பணத்து மேலே ஏன் இப்படிலாம் ஆசைப்படுறாங்கன்னு ஒன்றும் தெரியல. ஏதோ ஒரு உயிரினங்களுக்கு, ஏதோ ஒரு மனிதர்களுக்கு எதுக்குன்னா ஒன்று உதவி செய்யணுன்ற மோட்டிவ் தான்மா இது காரணம் இல்லை. என்னுடைய காரணமே அதுதான். எல்லாம் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கு ஏதோ ஒரு முடிஞ்சளவு உயிரினங்களுக்கு, எந்த உயிரினங்களுக்கான மனிதனுக்காக இருந்தாலும் சரி, உயிரினங்கள் எதுக்காக இருந்தாலும் ஒரு உதவி வருது ஒன்றும் ஒரு இது இல்லை. அது உதவணுன்றது தான் என்னுடைய மோட்டிவ். MC Escher has nothing on this place. Chand Baori is one of the largest and perhaps most visually spectacular stepwells. This deep, four-sided structure is made up of 3,500 Escher-esque terraced steps that descend down to a depth of 100 feet. A large temple adorns the face, dedicated to Harshat Mata, goddess of joy and happiness. You may recognize this incredible wonder. Its intricate steps have made appearances in Hollywood films like The Fall, The Dark Knight Rises, and The Best Exotic Marigold Hotel. Northwestern India, where the stepwell lies, is extremely arid. The well was designed to conserve as much water as possible. At the bottom of the well, the air remains 5 degrees cooler than at the surface, making it an excellent gathering place for locals during intense heat waves.